2015. Okay. Rising out of Election Commission's judgment. ठीक, चलें जी बताइए. My lord, my first submission is regarding the maintainability of these proceedings, because my lord has clubbed all the cases together. There are appeals as well, and there is a petition under 184(3). My lord, my first submission Supreme is Court of Pakistan, regarding and there was an objection on this proceedings. petition, and there was a chamber appeal. That is also fixed here. My first submission is clubbed all the cases. Under what provision of law these proceedings are being conducted? Number one, are they appeal under Representation of People's Act or Election Act? I am before my lord in appeal under Representation of People's Act. But there is this 184 petition also pending. आप अपना केस चलाएं ना. मैं अपना केस में चलाता हूँ. My submission is कि इस अपील में my lord ने सारे की सारे petitions को क्लब किए. आप अपना केस चला लीजिए ना. Don't repeat it. We've heard that point. My lord, my submission is: are my lords exercising power under 187 or 184(3)? Please proceed with your case. My lord. My lord, I have 4 submissions. जी. अपना नंबर दे दें petition का. Civil Appeal 880. Civil Appeal 880. Respondents 1 and 3. 0. जी. My first submission is the court of law mentioned in Article Supreme Court in its appellate jurisdiction. I'll just submit the brief as well. जी. The declaration mentioned under Section 160 or Section 62(1)(f) is outside Section 42 of the Specific Relief Act, because Specific Relief Act puts a certain conditions to obtain declaration. It has been held by the superior courts that the proceedings under Section 42 are not exhaustive. Courts can issue declaration without satisfying the conditions under Section 42. I rely on 2 case laws. One is AIR 1967 Supreme Court 436. AIR 1967 Supreme Court 436. जी. 11, my lord. जी. It says, in our opinion, Section 42 of the Specific Relief Act is not exhaustive of the cases in which a declaratory decree may be made, and the courts have power to grant such a decree independently of the requirements of the section. The same view has been expressed by Mr. Justice Mansoor Ali Shah while sitting as judge of the Lahore High Court in PLD 2010, Lahore 583. जी. That is para 24, my lord. In the Indian Supreme Court judgment, my lord, you have read this line that Section 42 is not exhaustive. Not exhaustive. So let me just ask the question. Is it not exhaustive in terms of the Specific Relief Act, or exhaustive with regard to constitutional jurisdiction as well? I mean, you've just read that line, and I can
go along with that, that Section 42 may not cater for all eventualities. My lord. The question here is not just that, but it is a question whether the declaration that is being envisaged, can it be a declaration by a constitutional court, for instance? It can be declaration by constitutional courts as well. Where does this judgment say that? The one that... It does not talk about constitutional court, but the judgment now I am referring, it talks about constitutional court as well. ठीक, नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है इस पे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे नहीं है। अच्छा, 42 आपका मतलब है तमाम कोर्ट्स पर एप्लीकेबल? मैं ये कहता हूँ कि 42 is applicable to civil court, but civil court can also give declaration without satisfying the requirement of Section 42. Similarly, other courts can also give declaration. the High Court in this case was following the Supreme Court precedents already settled. So is there a Supreme Court judgment on this point? There is a Supreme Court judgment, my lord. ठीक, अच्छा, next point आपका? I will read para 24 of Lahore's judgment. That is taking cognizance of the High Courts are bound by judgments of the Supreme Court. So there is no question about that. The High Court had to follow it. But now we are the Supreme Court and a larger bench. My lord. Ji. Now, The next point. next point is a court of law has not been defined in Article 62 or anywhere else in the Constitution. But superior courts has held that it's a court of plenary jurisdiction. That is PLD 2017, Supreme Court, 265. Can you repeat the citation? PLD 2017, Supreme Court, 265. That is at page 490. 490. 490, my lord. Ji. It's in the second part of the page. It starts with the expression "a court of law" has not been defined in Article 62. Which placidum are you referring to? Double S, my lord. Double S. Ji. From the middle. Ji. Read it. The expression "a court of law" has not been defined in Article 62 or any other provision of the Constitution, but it essentially means a court of plenary jurisdiction which has the power to record evidence and give a declaration on the basis of the evidence so recorded. Such a court would include a court exercising original, appellate, or revisional jurisdiction in civil and criminal cases. But in any case, a court or a forum lacking plenary jurisdiction cannot decide question of this nature, at least when disputed. What is plenary jurisdiction? Plenary literal meaning is a court exercising full powers, all the powers. Plenary jurisdiction means where the original jurisdiction has been exercised under Section 42. If you mean to say that Section 42 of the Specific Relief Act can be exercised by the High Court under Article 199 and 184 and 185 by the Supreme Court. No, my lord. So declaration means for all such type of declarations, the case must be under Section 42 or not? It need not to be under Section 42. Then- that is my submission. Then how the declaration can be granted in any other law? Declaration can only be granted by election tribunal. That is my submission. It means that it exercises the jurisdiction under Section 42. Not under 42, under Representation of People's Act or Election Act. That is the only forum. And after recording evidence or without recording evidence? After framing issues, now I will come to the power of the election tribunal. This can be exercised by the High Court directly It cannot be exercised by and the the High Court. Supreme Court directly. No, my lord. Supreme Court in appellate jurisdiction. Your last argument is in contradiction with the judgment you have relied. 490 पे आइए दोबारा. My lord. जहाँ से पढ़ा था उससे 2 लाइनें ऊपर. Even the election tribunal
even the election tribunal, unless it itself proceeds to give the requisite declaration on the basis of the material before it, would not disqualify the return campaign where no declaration, as mentioned above, have been given by a court of law. Now I will demonstrate how I say election tribunal is court of plenary jurisdiction. provisions बताएं ना कि वो नहीं है, वो भी नहीं कर सकता unless by the court of law. Let me explain the formation and the power of election tribunal. आपका आर्ग्यूमेंट ये हुआ ना कि सिर्फ प्लेनरी जुरिसडिक्शन के कोर्ट्स डिक्लेरेशन दे सकते हैं और आप कहते हैं कि अदर देन द नॉर्मल रेगुलर प्लेनरी कोर्ट लाइक सिविल कोर्ट्स एंड ऑल द इलेक्शन ट्राइब्यूनल आल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी. This is your argument. This is my argument. I also say that कौन से सेक्शन में ये पावर in constitutional jurisdiction. Show us the please provisions of the law. Election Act में कौन से provisions है declaratory jurisdiction exercise करने की? My lord, उसमें मैं आ रहा हूँ. Basically, election tribunal is constituted. No. Election tribunal is a different thing. आपने कहा ना election commission भी ये power exercise. I'm saying election tribunal. Election tribunal की जो power है वो तो फिर civil court के power हैं उसके पास सारे. Yes, my lord. They can exercise the civil court powers and they can record evidence because my lord, before declaring any person disqualified, they must be. Not true. The provisions But this debate won't resolve what the problem before us is. Let us not go into the powers of the election tribunal. Here, the power is, it's not a question of election tribunal exercising a power or election commission exercising a power. It's the power being exercised by a constitutional court. Now, you premised your argument by saying court of law is not defined anywhere in the Constitution. Can I first of all correct your premise and take you to Article 175 of the Constitution? If you read the Constitution provision, the chapter is titled The Courts. And now please read 175.1 and then 175.2. So I may be subject to correction, but there are courts of law and the courts, Supreme Court and the High Courts have other powers as well. Please read. My lord, there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. By law comes here. Now read subsection 2. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or or under any law. Now, first of all, then the court has been defined. There are Supreme Court, there's the High Court, and any number of courts that a law may enact. Correct? My lord. But so it is a clear distinction between the Supreme Court, the High Court, because the Supreme Court and the High Court exercise, and I presume this is the distinction, there is appellate power of the Supreme Court and the High Court where it acts like a court of law. My lord. And then there is an extraordinary constitutional jurisdiction of these courts, my lord, which it does not in the classical sense act as a court of law, but as a constitutional court. Therefore, they are called constitutional petitions. And we used to in earlier write extraordinary constitutional jurisdiction. So it's an extra jurisdiction conferred by the superior onto the superior courts of Pakistan. And now we come to sub-article 2. No court shall have jurisdiction save is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. Now, Article 199 confers jurisdiction under the Constitution, which is in addition to appellate jurisdiction. Article 184.3, other articles of the Constitutions confer certain jurisdiction onto the Supreme Court. Does Article 62.1f confer any jurisdiction on the Supreme Court? That is the question. Because there it says court of law, not the Supreme Court, not the High Court. My lord. So surely we cannot interchangeably use these terms. If it had not used the words court of law, which it does, so then it is, otherwise this power should have been mentioned in Article 184.3
or such powers as can be exercised by High Court under Article 199 or whatever it used to say. So we cannot just disregard the two concepts of a constitutional court and a civil court under Section 9. My lord. Yes, sir, you assumed a lot of things. Because when I used the word, it has not been defined. The phrase court of law is not defined. It is. Because I've just read 197. Supreme Court and High Court, that's the word they use. I am just referring to the phrase. Are you saying Supreme Court is one and the same court, but then it's exercising appellate jurisdiction as opposed to extraordinary constitutional jurisdiction? No, my lord. So technically speaking, they're two separate creatures. My submission is anything arising out of election tribunal is decided by the Supreme Court in its appellate jurisdiction. Correct. Any declaration in election tribunal or by the Supreme Court in appellate jurisdiction is covered under 162(1)(f). Not any power under 199. No, थोड़ा सा और clarify कर देना. Election tribunal will exercise powers only under the law, which used to be the Representation of People's Act and now is the Election Act of 2017, correct? My lord. Therefore, when the Supreme Court is exercising such powers, it cannot have more powers than the Election Tribunal or the Election Commission of Pakistan. Unless you can show that the Election Commission of Pakistan and an Election Tribunal can also disqualify for life, then that power, of course, will be with the Supreme Court as well. Otherwise, it will be an additional power given to the Supreme Court under 62(1)(f). Mr. Khurram, could I just summarize what you're trying to say? You're saying that the declaration from a court of law under 62(1)(f), court of law is only the court of law under the plenary jurisdiction, plus the election tribunal, and as a consequence, the appellate forum that hears the election tribunal. These are the plenary jurisdiction plus these two which can give such a declaration. There can be no declaration coming from the High Court. In 199. That's what he's saying. That's what I'm saying. What I'm submitting is plenary jurisdiction for 162(1)(f) is only exercised by election tribunal and Supreme Court in its दिखाइए ना हमें law से दिखाइए ना. अब show us from the law. That's what I'm saying. Show us from the law. Because PLD 2017 read the Election Act, show us ROPA or Election Act. My lord, ROPA मैं आपको दिखाता हूँ. Powers दिखा दें election tribunal. My lord, are we going to ROPA first or Election Act first? First I'm going to the Constitution and then I'll go to ROPA. Ji. And I'll refer the Election Act sections as well. Article 219 creates the election tribunal. It says duties of commission. The commission shall be charged with the duty of appointing election tribunals. We come to the point. Then Article 22 to 5, election dispute. No election to a house or a provincial assembly shall be called in question except by an election petition presented to such tribunal and in such manner as may be determined by the Act of Parliament. Then Representation of People's Act, Section 52, which says how proceedings are initiated. Representation of People's Act, Section 52. My lords. Constitution, you've relied on 225? I relied on 219 and 225. 219 for the creation, 225 for the dispute resolution exclusive power. And 62 or what? Section 52 of Representation of People's Act. Okay. No election shall be called in question except by an election petition made by a candidate for that election, hereafter in this chapter referred to as the petitioner. Then Section 57, appointment of tribunal. Who appoints the tribunal? For the election petition under the Act, the commissioner shall appoint as many election tribunals as may be necessary.
then aren't you undermining your own proposition when you rely upon Article 225, which is a very strong categorical language? No court. So how is the Supreme Court then can give a declaration under 62(1)(f)? Supreme Court. Read 225 again. It's very categorical. That's why I've submitted. Supreme Court can only give in its appellate jurisdiction, coming from election tribunal against the decision of. I think there are slightly two different propositions which you're mixing up. One is the competence or category of the court who can declare. First. Second is to what extent. For instance, in a civil suit, a civil court has jurisdiction to decree the plaint, dismiss the plaint, right? Or anything in between, reject the plaint or whatever. But it cannot tell a plaintiff to go and stand in the corner. My lord. That jurisdiction it doesn't have. My lord. Unless the law confers on it. Yes, you can ask the plaintiff to go stand if filing a frivolous suit. My lord. So let's not mix up the two concepts. Where if you read 225, it says no court, then that excludes the Supreme Court as well. Then the Supreme Court's power is only limited to acting as an appellate forum of the Election Commission of Pakistan or the Election Tribunal. Where will it get, where it is assuming additional powers from? Because section 67 of ROPA gives 67. Appeal lies to the Supreme Court. 67(3). G. Appeal from the decision of the election tribunal, it lies to the Supreme Court. Please refer to that provision of the Election Act or ROPA, which says 62(1)(f) can entail a lifetime disqualification. वो कहाँ लिखा है? मैं आगे आ रहा हूँ. मैं अभी नहीं आया. आगे power of tribunal है, which says that. Where is that section? आपके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक तो फिर ट्रिब्यूनल ही कर सकता था ना. तो फिर आपके आर्ग्यूमेंट तो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं है. व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू आर्ग्यू, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, डिक्लेरेशन दे सकता है ओनली इफ इट हैज अरीजन आउट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल. ठीक है, अभी जरूर कैन नॉट गिव डिक्लेरेशन ऑन इट्स ओन. हाँ, तो ये फिर तो आप you are not supporting Samula Baloch. Then you're not supporting Samula Baloch. To some extent I am, because in most of the cases disqualification arose out of election tribunal. In some cases they arose out of writ jurisdiction. In some cases they arose out of pre-election dispute. You are only supporting those. I am only supporting those cases where they have gone through the trial. Okay, ठीक है. I got they the point. have recorded evidence. Got that point. Got the point. ठीक है. तो आप कहते हैं कि प्री इलेक्शन जो मैटर्स वो नहीं आ सकते. Because there is no evidence recorded. तो सिर्फ लिमिटेड हो गया ना, सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से जो अराइज कर रहा है. My lord. अब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं. बस ये क्लैरिटी आ गई ना, इसीलिए पूछा था आपसे कि जरा वो आर्ग्यूमेंट कुछ. तो मैं इसमें सेक्शन 64 में पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल है. इट हैज ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट. वो ठीक है. I got it now. अब आगे मैं सिर्फ ये दिखा दूं grounds for declaring election of returned candidate void. That is under section 68. What an election tribunal can do. 68 of ROPA. That is section 68. The tribunal shall declare the election of the returned candidate to be void if it is satisfied that the nomination of the returned candidate was invalid, the returned candidate was not on the nomination day qualified for or disqualified from being elected as a member. Wait a minute. On the date of submission of nomination paper, he was not qualified. Yes. So it means before presenting the papers, there must be some declaration that the person was not qualified. My lord. And in result thereof, his nomination papers should have been rejected straight away. That can only happen. That can happen at the first stage when the nomination papers are submitted. That is that is also my argument. And secondly, after election, post-election, yes, the tribunal can
de-seat the candidate on the basis that prior to election you were disqualified. That is my second argument when I'll distinguish between Article 62 and Article 63. My question is whether under 62, whether somebody can be disqualified. Or 62 says if somebody is earlier disqualified, so his paper should be rejected. He has to be earlier qualified on the date of the nomination paper. So 62 does not clearly say that the person who is scrutinizing the documents has the power to disqualify somebody. The date is the nomination date. And we've understood that point. My lord. If I can just re-articulate my colleague's question, this 68, I've just run through it. My lord. It talks about disqualification. My lord. The nomination paper aapne diya, I'm the returning officer or the election commission or the election tribunal, I say you're disqualified for you're 24 years of age, for instance. You can't contest election. You are a bankrupt. You can't contest election. You have not paid your bijli ka bill. You have not contested. You're not a graduate, etc., etc., etc. This paper gets rejected. Where is the power of the commission or the tribunal to say that you're disqualified for life? The next election comes along. You are disqualified in this election. You again present your paper. I again look at your papers. And again I find, no, you are not qualified for these reasons. How an earlier disqualification, suppose now I'm 25 years of age, suppose I filed 24, naturally I can't contest elections. Or I'm a bankrupt, now I'm not a bankrupt, or I'm a loan defaulter, I've repaid the entire loan, or I've not paid my electricity bill, I've repaid everything. So that will not travel through. Where is section 68 say that once disqualified, you're disqualified for life? Where is that provision? My lord, that provision has only been inserted by Samiullah Baloch. That's what I'm saying, that for the time being, I am just arguing on one point, that is who can give the declaration of disqualification. I agree with you. First, there is no dispute on that. Second thing is, to answer my lord's question, I have to create a distinction between 62 and 63. That is my second submission. No, first of all, where is the power in the court, in this court, to do this? That is the essential question. Court has to determine whether he was qualified on the day of nomination under 62, 63. वो reject कर देना उसके, और अगर उसने गलत बयानी से किया उसको reject कर दे. But next election जब आ रहा है, तो how is he still disqualified? ये बताए ना सिर्फ point. Now I will come to answer this question. I will come to my second. देखिए एक आदमी ने एक रोपा में चेंज हुआ कि जी ग्रेजुएट होना चाहिए. एक ग्रेजुएट नहीं, उसने दरखास्त फाइल कर दी, वो मेट्रिकुलेट है. Naturally he'll be disqualified. अगले इलेक्शन में ये कंडीशन है ही नहीं, तो it can't be a lifetime bar. It's illogical. That's what I'm saying. Article 62 may, if there is a declaration that person is not honest. Why he was not honest? Because in my case... Now you've taken a leap of faith. No, my lord. No. Again, अब आ जाती बात ये leap of faith वाली. So you are saying honest. Now honest. Suppose okay, let's take another case. Make it simple. He honestly declares in his nomination papers that he's a matriculate. He honestly declares in his paper that he's 16 years of age. Honestly, उसने लिखा 16 साल का हूँ. Consequence तो वही होगा ना. If he is not 16 years of age, वही वो कह रहा है मैं हूँ 16 साल का. If he is not 16 years of age and he is 14 years of age, अब बात नहीं समझ रहे हैं ना. 25 साल का सिर्फ लड़ सकता है ना इलेक्शन. वो सचमुच कहता है मैं 16 साल का हूँ. वो सचमुच कहता है मैं ग्रेजुएट ना हूँ. आप इसको naturally can't contest election. Can't contest election. So ये जो honesty और dishonesty वाली बात तो becomes irrelevant. It's a factual determination. That's what I'm saying. Fact. Who has to do the factual determination? चलें ओके आगे बढ़े. मैं Only election tribunal through recording of evidence. We've understood the first point, please. Now my move on to the next point, please. The duration part. इसी पे देखें ना, जो फर्स्ट आपने कहा कि प्री इलेक्शन जो उसकी नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन है, that does not cover the grounds mentioned in 68. वो तो होने ही आफ्टर द इलेक्शन है. After the election. तो इसलिए वो तो जस्ट रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स. As per your arguments. That is my argument. कोई डेक्लेरेशन, कोई
body secretary. वो क्वालिफाइड था या नहीं था पहली डेट के ऊपर, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक करना है ना. अगर रिजेक्ट होगा तो अपील हो जाएगी, अगर कोई अपोज करेगा तो भी अपील हो जाएगी. ठीक है ना. मगर बात क्वेश्चन इज दिस कि आफ्टर सेवरल इयर्स वो कहेंगे इवन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर नॉमिनेशन पेपर यू वर डिस्क्वालिफाइड. दैट डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन बाय विच कोर्ट? Election tribunal. Election tribunal. You understood that, Mr. Forum? चल अब Forum, let's proceed further. एक बात इसमें और बता दें. इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या डिस्क्वालिफिकेशन 60 आर्टिकल 63 से हट कर दे सकती है? और अगर कोई डिक्लेरेशन वो कर दे कि इज डिस्क्वालिफाइड और वो डिस्क्वालिफिकेशन 63 में नहीं आता, नहीं दे, क्या उसकी बुनियाद पर फॉर इवन फॉर सिंगल डे ही कैन बी बार्ड फ्रॉम contesting? Election tribunal has to decide on the basis of 62 for qualification. No, and disqualification in 63. This is clear. If any declaration is made by the tribunal, which is not in accordance with Article 63, whether on that basis, even on the declaration of tribunal, somebody can be debarred from life or even for a day. No, my lord. Without trial cannot. Even trial is conducted, the tribunal come to Even after trial it cannot. वो कह देता है कि disqualified. Without the ground given in 63, he cannot. Mr. Forum, could we just summarize what's happened? Your submission is that, first of all, disqualification can only come through a plenary court of plenary jurisdiction, plus the election tribunal and the appellate forum hearing that election tribunal's appeal. That's one. And declaration cannot come from any other source. Change here. मैं कुछ और कहना चाहता हूँ. So this we've understood. I'm just saying that the premises on which Samuel Baloch proceeds is that once that declaration is in the field, that you're disqualified. Unless that declaration is set aside, you remain disqualified. That's the premise of Samuel Baloch, number one. Number two, Samuel Baloch also says that declaration is not right in your face, saying that you infer from the circumstances of the case. For example, वो कहेंगे कि आपने misdeclaration की है, इससे infer कर रहे हैं आप honest नहीं. Because nobody is directly, इस पे तो evidence नहीं ना आप honest है, I mean आप infer कर रहे हैं. That's what Samuel Baloch also says. So you construct it, you say कि आपका form गलत था, आपका ये गलत था, इससे हम कंस्ट्रक्ट ये करते हैं कि आप अमीन नहीं हैं. These are the two premises on which Samuel Baloch proceeds. Now we just need to understand whether at all the fact that the disqualification stands can continue forever, and if that disqualification was taken into a criminal proceedings and he went through H63H and went through a actual conviction, he comes back. And there are a number of other offences where he commits even a heinous crime, he comes back. तो बस इसका हमें आप बताइए कि the fact that Samuel Baloch goes on the premise that declaration on the civil side done will continue as long as that declaration is set aside. My lord has properly rephrased Samuel Baloch, but my argument is a bit different from that. Right. My argument is any declaration coming from a high court in a constitutional jurisdiction. We understood. That's not a declaration. So that's all those declarations so are out. The only court of plenary jurisdiction is election. Understood. आगे चले. Now, the whole argument revolves around whether Article 62 and 63 are inherently same or distinct. If they are inherently same, they can be used interchangeably. Then we can interpret 62(1)(f) in view of 63(1)(h). But if they are distinct, then we cannot interpret these two. We cannot try to resolve the ambiguity. So, that Article 62 is distinct than Article 63. Is it not dependent? Article 62 is not dependent upon 63. No, my lord. How do I demonstrate that? If I just go to Article 62, it says, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless it talks about an event prior to the election. Yes.
जल्दी करें ना, पढ़ चुके yesterday. My lord, 63. I don't see much turning on your point, but chalein, proceed with it. A person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Masjid Shura if in 63 after the election, after the he becomes member, the event, any of the event given in 63 can trigger and he can be disqualified. But in 62, after he has election ki aap baat no kar rahe hain. event subsequent to the nomination can disqualify him. I don't agree with you. Because if that is the case, then a non-citizen can contest elections, which is not provided for in 63, which is only provided for in 62. So I don't think this, jo aapne distinction draw ki hai, I don't think anything turns on it. My lord, 62. He says he's a citizen of Pakistan. This provision is not found mentioned in 63. Suppose a non-citizen files in a nomination papers and somehow gets elected. So you mean to say that challenge cannot be made about him? I would not agree with that proposition. My lord, because the entire section of 62 has to be read in view of the opening clause. Particularly. It says a person shall not be qualified to be elected or chosen. कुछ हुई तो नहीं था. I think America court where he was declared non-righteous. So what are the likelihood? No, ye baat aapki, sorry, doesn't hold any water. Let's read first disqualification. He is a citizen of Pakistan. Suppose Mr. James Gray from America comes and contests, born American citizens, never been a Pakistani citizen, and gets elected. Please wait. Now go to 63(1)(c). He ceases to be a citizen of Pakistan. That is, a person was a citizen of Pakistan, has now taken on citizenship of America. So you are saying, yes, once that somehow Mr. James Gray got elected, you can't touch him now. Yes, sorry to say, yeah, but it's a distinction not draw. I am not saying this. Mr. Khurram, there's one way of looking at it. Just read the first line of 62 and the first line of 63. It will show to you that it's interchangeable. There is hardly any difference. A person shall not be qualified to be elected. Ruk jaye. Aap 63 padhein. A person shall be disqualified from being person elected. Shall be disqualified from being elected. So both are happening before the election has taken place. Elected or chosen. दोनों चीजें एक है. Disqualified or qualified, but it's synonymous. I mean, it makes sense. 63 का जो second. तो फर्क क्या पड़ना है इस argument से आपके? How will it support you? So because if I can convince my lordships that they are two distinct sections because of their... Was there two distinct sections, but what will turn on it? Ye bataye na. Then we have to interpret 62(1)(f) only. उसी पे तो आपको ले जा रहे हैं. We do not have to interpret 62(1)(f) in view of 63(1)(h). चलें 62(1)(f) को कर लेना फिर आप. आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 62 and 63 are distinct articles and we cannot interchangeably read them to give them a meaning. My lord. So उनको separate पढ़ेंगे, उनको separate. We've understood your point. आगे बढ़ें. थोड़ा सा speed कर ले if you don't mind. We don't want to leave this case unresolved. 10-15 more minutes. Now, when I distinguish that they are two distinct, then we have to read 62(1)(f) on its own. Every word has to be given its meaning. Mission is that when we will read 62, then as long as the declaration by a court of law is in field,
disqualification will remain. Court of law declaration is the Supreme Court itself. ये point पे आ जाइए ना. Supreme Court itself cannot give in any other jurisdiction other than in its appellate jurisdiction from the election tribunal. आपका फिर समीउल्लाह बलोच वाला argument है ना कि once the declaration is there, 62(1)(f) has to be read alone. Once the declaration stands, disqualification stands. My lord. And it goes on as long as the disqualification. So the question to you is that we have to look at the Constitution in totality as a whole. Does it not appear odd to you that for other crimes as big as perhaps treason in G and others, you can always come back and contest election? It's not a lifetime situation. But for a civil wrong, which could be as small as committing a misdemeanor of misdeclaration or just lying through you've omitted one entry in a return, the punishment in a way is for life. But if I were to go murder somebody, if I would commit treason, if I were to kidnapping, I could come back and contest election. Where from the tribunal gets the powers for life time disqualification? It has declared. Oh, no, where from gets the powers to declare him Has for life? declared a decree given remains intact for all purposes. Fair enough, we've understood that. Next point. Now this argument basically it lies in Islamic principles. If you look at PPC, out of all those offences, there are very few offences in which mens rea is dishonesty. My submission is, wherever mens rea is dishonesty, we are talking about public office holder. You just very casually referred to Islam. Either back it up because I completely disagree with you. You have to back it up. If your contention is agreed, there were those who were violently opposed to Islam, and then they became Khalifs, Khulfa Rashideen. तो वो आ ही नहीं सकते थे फिर वापस. This just don't throw in Islam just like that. It is contrary to Islamic injunctions. तौबा का प्रिंसिपल है, राय रास्त पे प्रिंसिपल वापस आने का प्रिंसिपल है, मुस्तकीम शारे मुस्तकीम पे वापस आने का प्रिंसिपल है. शुरू में तो 2-4 ही मुसलमान थे. I mean, we are. तो ये आप ऐसे just don't throw in Islam to give it a validity. No, my lord. What I am submitting is, if repentance or tawbah, when we look at it, repentance और तौबा की तो बात से आगे मैं चला गया हूँ. That's what I am submitting. These are 3 things kept by God to Himself. Number 1, not at all. Izzat Zillat. Not at all. Let me make my submission. No submission. You refer to the Holy Quran. You can't just make a submissions contrary to Islamic principles like this. ऐसे नहीं होगा. But I change the subject a little. Let me just introduce one other aspect. Let's stay on 62(1)(f). If we look at 62, some of the disqualifications or qualifications are mentioned in the Constitution itself, like he has to be a citizen, the age and all. This is specifically provided. 62(1)(f) brings in a disqualification from a declaration from another court under some law, not the Constitution. It is a declaration of disqualification under declaration of contrary under some law. And if the law Parliament goes ahead and fixes that law and says any such declaration of that law has to be for 5 years, that is actually not tampering with the Constitution. It is providing that any declaration in 62(1)(f) is arising out of a law, not of the Constitution. Because court of law ne karni hai na disqualification. That disqualification is arising out of a law, and the Parliament goes ahead and says any disqualification under the law has to be for 5 years. So then, with that 5 years amendment brought in, isn't the period being provided for 62(1)(f)? Because the Constitution itself doesn't give an unlimited period. It is relying on a declaration coming out of a law.
and law has been corrected and given a period. So there's a distinction. Had there been a constitutional provision, disqualification like age being 25, then perhaps, to my mind, legislation could not do it through ordinary legislation. Constitutional amendment was required. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. Is pe kuch roshni dal? My lord, it depends on the validity of the law. That's why I tried to argue that under what proceedings we are before my lordships. I rely on PLD 2012 Supreme Court 923, Baz Muhammad Kakar, Federation of Pakistan. It is the case where Contempt of Court Act 2012. हमने सारा आर्गुमेंट सुना हुआ है, proposition बता देना please. My proposition is through ordinary law, Parliament cannot amend the Constitution. No, fair enough. It has not amended the That's what I'm trying to tell you. Added in the Constitution, because how do I demonstrate whether the court can amend the Constitution? Court can interpret it. Interpret in a manner to amend the Constitution or to read into the Constitution? No, my lord. So this is what we are asking from you, whether the interpretation can be done. देखिए इसमें एक बात आप ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) में ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए कोर्ट से, और आपने कहा कि डिक्लेरेशन सिर्फ ट्राइब्यूनल दे सकता है. ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 157 वो ग्राउंड्स बताए गए, ठीक. क्या उन ग्राउंड्स में ये बात है कि ट्राइब्यूनल इस बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप राइटियस नहीं हो, आप सजेस्ट नहीं हो, आप अमीन नहीं हो, आप सादिक नहीं हो? ऐसी डिक्लेरेशन आएगी तो 162(1)(f) इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. That's what I'm saying. That in my case, FA degree was forged, BA degree was forged. Trial में आप हमें डिक्लेरेशन कहाँ से आया आपके केस में? Election Tribunal. देखिए खुरम साहब एक चीज़ है, देखिए speaking for myself, there is no confusion in my mind that to set aside a judgment, the premises on which that judgment stands needs to be taken away. So if the judgment stands on a law, then there could be an amendment in the law, and that foundation of that judgment on which it stands is taken away, and that judgment is nullified. If the judgment stands on the Constitution, constitutional amendment is required to take care of. There's no, as far as I'm concerned, no problem. I'm saying in this particular case, 62(1)(f) is not a disqualification. The judgment does not stand on 62(1)(f) as such. It stands on a declaration by a court of law. My lord. That declaration is not done through Constitution. That declaration must be of based on some law. That law now provides a period of 5 years for such declarations. Hence, that premise, that declaration that's coming out of a law has been given a period. So wo khatam ho jati baat, 5 years then plugs that problem. Election Tribunal has to determine on the basis of qualification, disqualification given in Election Act as well as 62-63. Why I am saying is I have also appended parliamentary debate from Senate on the amendment. It's at page 28. They have admitted it's silent. Once they have admitted it's silent, the only requirement... What is it is admitted is silent, what does this mean? I mean, in parliamentary debate, which we can look into to see. Why don't you look at the Constitution itself? I don't know, देखिए ये from Hebdo. Do you know what Hebdo was? My lord. One dictator, my lord, throwing out everybody, my lord, followed by another dictator, throwing out everybody, following by a third dictator, throwing out everybody. Are you forgetting all these things? No, please, एक second ठहरिए ना. The Constitution, original Constitution, did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Correct. Why you gave it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. We can, जरा बात तो सुन लेना. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे, या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं. जब पार्लियामेंट में जो 326 लोग बैठ करके कानून साजी कर रहे हैं, जो आप 326 से पहले कम होते थे, वो एक कानून साजी कर लें और उन्होंने ये किताब हमको बना के दे दी, और फिर एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एब्डो कर दिया. तमाम पाकिस्तान के सियासतदान इंक्लूडिंग
My father was disqualified because he had the mistake of helping make Pakistan. But a general, you prevailed over everyone. You are not even attending the constitutional thing. You are supporting everything done by a military dictator, having precedence. Now show us this thing, then the next dictator comes along and says, no, I introduce graduate condition. The third dictator comes along and says, no, I introduce Sadiq, Amin, righteous, profligate. अगर देखें एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट, मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से. काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं, काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ, ठीक है, उसको पता नहीं. मुनाफिक को पता हो के करता है. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रॉफिलिगेट अमीन वगैरह. ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना किसी को फिट करना, ये बातें अब व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट? यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट. You are saying a disqualification by a military dictator, a rapist can contest elections, but a person who makes a mistake, उसमें ये भी लिखा है कि कितने तोले सोना आपके पास है, ठीक है, आपने 6 लिख दिया, मालूम है आपके पास 8 थे, तो you are disqualified. आप आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम आपको होल्ड करते हैं कि बुरा ना माने कि you are a profligate, you wasted the time of the court. कल आप इलेक्शन में तक नॉमिनेशन पेपर आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये जजमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी अ प्रॉफिलिगेट, ही वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड. So let's not forget small things. We start focusing on small things. Look at the larger picture. Look at the context in which these amendments are brought into the Constitution. Look at Article 225. उसको आपने totally नजरअंदाज कर दिया है. Except you're not even saying a word about Article 225. It says no court shall. वहाँ आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट नो कोर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यहाँ कोर्ट में आ जाएगा. तो ये आप जरा टोटलिटी में बात कीजिए. Let me submit. I was referring to, if you look at the amendments, 62(1)(f) was amended in. First one, is it a good amendment? It was amended. I'm asking your opinion. I'm talking about 18th amendment. I'm asking your opinion. 85 not good amendment, but 62(1)(f) is good. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं. वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है. प्लीज आप देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. आप सवाल का जवाब दें, खुद में फिर जो कहना चाहते कहें, जो सवाल का जवाब आप कर लो. I agree with you. I am against dictatorship. I am for the Constitution. Reflect this in your arguments. What I am submitting is, when they amended and added a law, court of law, declaration by court of law in 62. At the same time, they added 10A. ये तो पार्लियामेंट ने किया, ये भी पार्लियामेंट ने किया 18th amendment में. 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे elected representative होते हैं, ठीक है, उनकी cumulative wisdom है. Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. My lord. So why are you disregarding the wisdom? Why is the constitution being just, if it's a dictator, we cannot touch it. ये नहीं करें ना, आप मजीद पॉइंट आर्ग्यू करें. I am submitting my arguments on the basis. अच्छा, next point बताएं, क्योंकि you're not making headway now. You stopped. My lord, my next point is that when they brought in amendment in section 232 of the Election Act, during the parliamentary debate, it was admitted that Article 62(1)(f) is silent regarding period of disqualification. I have appended a copy of Senate's proceedings, which says, we don't need to. It's obvious it's silent. It's silent. Yes. Now my submission is, once they have admitted that it's silent, they have to bring in constitutional amendment. So let's put it another way. My lord. Suppose we say 232 is not good law. My lord. And we also hold that judgment of the Supreme Court is also not good law. My lord. Then there is no disqualification at all, not even for a day. My lord.
Yes? Yes. Then they have to amend. So you say the wisdom of 5 gentlemen sitting in this courtroom overpowers the wisdom of 326 parliamentarians sitting on in the next building. For what reason? Give us a reason. Give us some logical reason. I mean, just because it said so. That's all. Parliament had the power to fix 5 years in Article 62(1)(f), but they did not. अच्छा, चले आगे बढ़े ना, थोड़ा डिबेट को आगे ले चलें. देखिए, अगर इंटेंशन होती लेजिस्लेचर की, वकील साहब, अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि कोई सजा होनी चाहिए, जैसे 63 में बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो, कन्विक्शन पूरी होने के, सेंटेंस पूरी होने के बाद 5 years और 3 मुख्तलिफ बताए, 5 years, 3 years, उन्होंने पीरियड बता दिया. तो क्या इनका इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे पीरियड ना बताने का, सिंपली इट इज if they had the number and the intention, they would have expressly mentioned it in 62(1)(f), like they did it. Why not we should consider it as positive कि इसके कोई सजा ही नहीं है, तो कह दिया कि फलां शख्स झूठा है, बस that's all. या प्रिज्यूम किया जाए हर शख्स सच्चा है unless proved to the contrary. ये अल्फाज भी लिखे हैं, हर शख्स. क्यों प्रिज्यूम करें कि वो झूठा है जब तक वो साबित. Constitution is silent about period of disqualification. Which constitution? Next point पे चले ना. You are repeating yourself now. So your second argument. A lot of people to be heard. Speed it up, please. Only constitutional amendment would have done this. That is my submission. Only constitutional amendment. And I support this argument with this thing as well. In Article 62, they have given various period of disqualification: 3 years, 5 years, 4 years, depending on the gravity as Parliament thought at that time. Repeat yourself. Repeat yourself. I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of. No, I can just pose you a question. If in Samiullah Baloch, I'm writing now the judgment of Samiullah Baloch, imagine it, and I say that 62(1)(f) does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime, and I put 2 years. Suppose it would be as valid a judgment as Samiullah Baloch, correct? For no logical reasoning. It is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation, on some logic. Either you should say I would be wrong in saying 2 years because you just picked out a number from your head. It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. There could be only 2 possibilities. No, why not 2 years? I write Samiullah Baloch and say 2 years. It's not written there. Exactly, so it's all up to do with my mind. No, but it's nothing to do with the Constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको attend करें ना इस बात को. If it's silent, that means understood your point. Until it's in field. चलिए अगला point या फिर हम किसी और से पूछें. This larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. Let's reinterpret. Election Amendment Act 2023. Now my submission is if we are in 187, then I can object on the vires of Election Act 2023. If we are only in appeal, then we cannot argue on the vires of the Election Act. आप तो वैसे challenge नहीं करते उसे. You have not challenged vires of 232. That's not the question. It's not the question. Vires of 232 is not. Nobody has challenged the vires in the High Court or in this court.
My lord, it has been challenged in the High Court. I've given you the There has petition. not been decided yet. My submission is, if we, because my lords have combined all these appeals along with section 194(3) petition. So my understanding, the way Your understanding should be found. The answer is in the order, the first order that we passed. Since elections are scheduled for 8th of February, one returning officer will do one thing, another officer will do one thing. There should be clarity. It's as simple as that. Now, if you want utter, total confusion in Pakistan, that every constituency, one returning officer is saying, I will follow 232, another returning officer will say, I will follow Samiullah Baloch. So we have stated very clearly, we want clarity, one way or the other. The returning officer is not a competent lawyer as yourself, it's maybe a bureaucrat, so give him clarity. That's all we're doing. That's what I'm submitting before my lordship. While you are hearing this, you have also issued notices under section 27, order 27A to all the Advocate General and Attorney General. The whole of Pakistan we've issued notice. You might as well decide upon the varies of this thing. नहीं वो भी कर लेंगे आप बता दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है That is my submission. अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं कहता हूँ इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल I rely on Bas Mohammed judgment. एक बात बताएं दे कि आप कह रहे हैं कि ये क्लियर पार्लियामेंट ने खामोशी इख्तियार की 62(f) में कुछ बताया नहीं, उसको हमने इंटरप्रेट किया. अब हमारे बाद पार्लियामेंट ने इंटरप्रेट कर दिया. क्या पार्लियामेंट का विजडम हमसे ज्यादा है या कम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए? किसके इख्तियारात ज्यादा, ये बताएं. Parliament has to frame, my lord has to interpret. They have framed the law, they have framed the law, they had to interpret the constitutional provision. उन्होंने कह दिया कि ये हमारा विजडम था. They had to frame it under 239, 238, 39. They had to bring in constitutional amendment. आप लिखा दे बास काकड़ की citation लिखा है 2012. ALD 2012 Supreme Court 923. And what paragraph are you relying for the para 50? For declaring the law ultra vires. Declaring the law ultra vires. So लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो. Thank you. Anything else? Huh? Sorry, we are giving you a tough time, but we want sometimes tough questions help us resolve our own difficulties we are having in understanding things. My lord, thank you very much for giving patience. Nani, thank you very much. Who will next? माइकल्स को हम पूछ लें या आपका? नहीं, आपकी कैटेगरी में जो पोस्ट कर रहे हैं साहब आ जाइए. और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब. सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकंड. ही सीनियर, विल आस्क हिम फर्स्ट. सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें. My lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया. जी सर. जी. I owe an explanation, my lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए. इधर माइक. हाँ. While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification, that in my case of Mr. Muhammad Kashif, that is, my lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake degree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my lord. Then a writ petition was moved, and in that writ petition, the order of the tribunal was set aside and that of the returning officer was restored.
Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? Mother, I am telling that what is the point involved in my case. In fact, सब्जारी साहब जरा सा आपके लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं. हम इंडिविजुअल केसेस 5 ईयर बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है. तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन. तो हम आपके इंडिविजुअल केस आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों वो फिर अलहदा सुनेंगे जी. तो ठीक है जी. फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं. मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ जी. एक थोड़ी सी बात ही कहता हूँ जी जी कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. F था ही नहीं ओरिजिनल में. कर रहे हैं ना support. 18th amendment से पहले They could do so amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out that that was brought by a dictator, but then there were subsequent parliaments. And ये बात सही है आपकी, ये बात सही है. और फिर वो माइलॉट जो आया है 62 में अमेंडमेंट की है 2010 में, उसमें कंट्रेरी कोर्ट किया. ये बात आपकी सही है बिल्कुल. दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है दैट इज जजमेंट लॉ. समी साहब के केस में जजमेंट लॉ, और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता. बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं. आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी? उसके पेपर रिजेक्ट किए ना जी उन्होंने लाइफ टाइम जी. नहीं, इस केस में एक इलेक्शन था जो तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को? नहीं, खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ. तो आई एम कंफ्यूज्ड, देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए. जो दो जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट. मैंने सर अर्ज कर दिया, जो अल्लाह बीनू केस है और जो केस है उसका सरदार. आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है. मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है. ये है जी. चलिए, और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, एक बात आपसे पूछ रहे, ये जो आप कहते हैं ना डिग्री जाली डिग्री थी, रिपीट ना कीजिए पॉइंट. Under what proceedings we are before my lordships? आप उनके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं? मैं लॉर्ड पार्टली अडॉप्ट करूं लेकिन मुकम्मल नहीं जी. मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के बाद. नंबर बताएं केस का. मेरा नंबर है जी 984 और 2018 मालूम. आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट? एपिलांट हूं मालूम. अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में. अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले. चलिए अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें. 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का. विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती. ये आईनी पे नजर फरमाइएगा 199 में मालूम जी. पहला मालूम सबसेक्शन सब क्लॉज 1 में पढ़ूंगा. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन
The High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Now I'll go to Roman 2. Declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, अब सी जो बी का रोमन 2 मुलादा फरमाइए। इस जगह ना उस्मान साहब ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना? जी मालूम, इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर? नहीं मालूम, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया, ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जी मालूम, सरकार के खिलाफ के लिए, आम आदमी के लिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं पहला सवाल ये था मालूम का डिक्लेरेशन क्या 199 के अगला मालूम देखिएगा, इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी, on application of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी, वो भी जो वारंटों की jurisdiction है जनाब, ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना। हाई कोर्ट मैं यही कह रहा हूँ, हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ, सिर्फ ये नहीं कहती कि आप इशू करें। ओरिजिनल jurisdiction of the High Court under Article 199, writ of co-warranto can be issued by the High Court. जी मालूम, This is the only declaratory power यही है। मालूम बिल्कुल ठीक है, यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है। चलिए मान ले, आगे बढ़ें, आगे मैं अर्ज करता हूँ मालूम, इसको इस तरह देख ले, मान लेते हैं ये बात है, तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी, कोई डिक्लेरेशन होगी, तो हाई कोर्ट कहेगा हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस। मतलब यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर उसके बाद लाजमी नहीं इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज में भी समझे, आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, मैं दोबारा आऊंगा मालूम ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है मालूम, ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, ए प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. ये declaration नहीं हो सकती, ये order नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि declaration इनबिल्ट है इसमें। और इसी तरह देखिएगा मालूम बी का ये ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं 199 में, जो पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस, उनके ऑर्डर जिसके अंदर कोई एडिक्वेट रिलीफ रेमेडी नहीं होती है वो रिट में डायरेक्ट। इसी तरह आप देखिएगा बी राइट ऑफ अपील दी हुई होती है तो पहले अपील में जाते हैं। बी का 1 देखिएगा मालूम आप, इसमें प्राइवेट पर्संस की हेबियस कॉर्पस के वाले वो भी डिक्लेयर होगी कि दैट इज इलीगल डिटेंशन। आप सबसे पहले 199 के ओपनिंग वर्ड्स पढ़ ले, व्हेन देयर इज नो रेमेडी। मानो बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन लॉ में अब काइंडली सी मुलादा फरमाइएगा। बी ये जो सी है मानो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अब गुजारिश ये है कि ये डायरेक्शन भी विदाउट डिक्लेयरिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करने में फेल हुए हैं। पॉइंट ये है मानो, आप हमें से पढ़वा रहे हैं, पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन के बगैर, मतलब डिक्लेरेशन दिए बगैर हाई कोर्ट 199 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। और इससे हमारे केस का क्या ताल्लुक हुआ? इसमें क्वेश्चन जनाब ये पूछा गया था कि क्या डिक्लेरेशन हाई कोर्ट प्लेनरी जुरिसडिक्शन की कोर्ट के अलावा कोई दे सकता है या नहीं दे सकता? मेरी हम्बल सबमिशन ये है, ठीक है, दे सकता है। चले आगे बताएं, आगे बताएं। अगली बात देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f) है मालॉर्ड, एक सवाल मालॉर्ड ने ये पूछा था, दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? नहीं, मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा मालॉर्ड। अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिसक्वालिफिकेशन का जिक्र है। यानी डिसक्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिसक्वालिफिकेशन। आई पर्सनली एग्री विद यू। मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा बात है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े जी मालूम। उसमें तो इंटरचेंजेबल है ना जी, इंटरचेंजेबल है, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वही वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। सही है। अब माय लॉर्ड, जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो
ओवरऑल जो जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं सेक्शन 42 में करती हैं, या कोई और लॉ भी है जिसके तहत वो डिक्लेरेशन की डिग्री ग्रांट कर सकती हैं। और मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द CPC जो है वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट्स को टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ मैटर्स ऑफ सिविल नेचर माय लॉर्ड, और उसमें सेक्शन 42 एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, बट दैट मे बी a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is, in my humble submission, is not correct, that section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now my lord, मैं अब आता हूँ 232 पे my lord. Honorable my lord ने पूछा था कि 62(1)(f) में जब डिक्लेरेशन दी जाएगी तो वो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइचियस और नॉन प्रॉफिलिकेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अमीन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f) के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डिक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 62(1)(f) जो है वो अमेंड नहीं संभव, वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सादिक एंड अमीन, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सादिक और अमीन? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा D एंड E जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, F को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिकेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मीन्स के अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये फिर इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, अमीन ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया, कहते ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए, अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जो तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, मैं हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? और ये तो उर्दू का लफ्ज है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और
इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन। कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मालूम ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। गुजारिश ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं, 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा। ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। द सेम लर्नेड ऑथर जज has also authored the judgment in Faisal Wavda case. उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो can you reconcile the two judgments? Yes or no? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूँ कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावदा के can you reconcile them or not? नहीं हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो you are being very fair। आगे बढ़िए। अब जो ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591, फैसल वावदा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी। अलादीनो भाइयों केस मालूम, ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा क्या आहिस्ता 2013 SCMR 1655 जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच करेक्ट लॉ। कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ। और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाय किया गया है, इसको कोट किया गया है। पिटीशन अलाउड जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जैसुमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा भाइयों, रिव्यू वाला भाइयों या ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड ही 2020 में हुआ। तो रिव्यू के वक्त इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उस पे कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। मौका नहीं इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि dissatisfaction of the Supreme Court over the Samiullah Baloch is apparent due। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब मैं तो मुकम्मल कर दी। मतलब यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल्लाह बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मुतल्लक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है।
अगली जो ऑनर मुलाजा फरमाइएगा जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड No, my lord, that is in field. But this is one of the consideration for a reviewing of the judgment of the Samiullah Baloch. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judge. My lord. And Samiullah Baloch is a 5-member. My lord. That So reason. to that extent, it will prevail over the 3 judges, even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त. आप काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर. 2021 SCMR 988 my lord. Sorry, दोबारा कहिए. 2021 SCMR 988. टाइटल 988. मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ मालूम. इसका टाइटल मैं मालूम. सॉरी मालूम. जी मालूम टाइटल मैं ढूंढ रहा था मालूम. सॉरी हम आपको बता देते हैं. सॉरी. केसरानी केस है केसरानी. अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी. जी मालूम. अब मालूम गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डायरेक्ट टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मेलाफेडे नहीं थी. the same author. शेड्स No, my lord, that is the judgment. लेकिन one of the member was the same. जी, यानी मिस डिक्लेरेशन को मेलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया. गो के मिस डिक्लेरेशन थी. अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती. आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी, the court is trying to get away from some. my lord, and last judgment on this point. But the learned author is also member of the bench, my lord. Though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. My lord. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023. PLD 2023, Supreme Court, page 42. 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई. इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड. एक सेकंड यार. क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था. एक मिनट जरा आ जाए. ये जरा दे दें 23. ए की के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f में या नहीं होगा. उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे मालॉर्ड पेज 82 पे डील किया मालॉर्ड. फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है. इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज. ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही मालूम जजमेंट. ये 82 किस पेज कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है मालूम जो रेलेवेंट है. हमारे यहाँ किस पार्ट में? ये फरवरी के पार्ट में. फरवरी पार्ट भी दे दें इसका. इसमें दोनों जगह चल रहा है. इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात कर. जी मेजॉरिटी की व्यू की बात करें. मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है मालूम. जी पेज 82 मालूम. पैरा 4 योर ऑनर. ये शॉर्ट ऑर्डर एक सेकंड आने दें. माय वाला. Today you're all charged up, very good, precise to the point. Thank you, मालूम. Page 82. Paragraph 4. जी मालूम. जी. मालूम. जी. As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it must be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to
thought and eradicate the questions stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा मालूम। 63 वाली बात है। अगर 63 की बात हो रही है, नहीं इसमें फाइनल में 62 आ गया मालूम। डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें मालूम? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं। सॉरी इसमें मालूम इसी के आखिर में है मालूम। सॉरी मैं गलती से कह गया था। ये इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में एज मैं मालूम। अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड मालूम। थर्ड पार्ट में तो नहीं मालूम डिसेंटिंग ओपिनियन है इसी में है मालूम। ये इसी में फेब में है, फेबी में होगा। 146 पेज मालूम। 117 पेज 146 मैं रीड मालूम। 146 पैरा 117 मालूम। Last para of जी मालूम। majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand answered accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल अपलोज के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं सर एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइड किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? तो आपका जो पहला मौक़िफ़ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट में। ऐसे नहीं है, काइंडली देखिएगा 1P हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए। वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका रियल इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल अपलोच अप्लाई किया जाता 63 1P में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168 इसी बुक में। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। जी माय लॉर्ड 168 माय लॉर्ड पैराग्राफ 10 माय लॉर्ड 10 and 11 both 11 दोनों पहले 10 पढ़े बेटा। There are a variety of reasons why members of parliament decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it.
sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents, whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices. Creative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis. Unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest and mean, there being no declaration to the contrary by a court of law. The said provision of Constitution is in clear terms describe that only upon a declaration from a court of law someone can be considered as such. This court is, in cases of so-and-so, has held that an elected member can only be declared as no longer sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean after a declaration by a competent court of law in this regard. In order to further protect the fundamental right of the citizen, Article 10A, my lord, introduced by the Constitution through 18th Amendment, according to the said article, for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the Parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. जी मालूम अगले बुक में चला गया अगली किताब में आएगा जी मालूम मैं पढ़ देता हूँ. By a competent court of law after adopting due process through fair trial, determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution. In a democratic system, there is always a difference of opinion, and every member has a decision of right to dissent and debate in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent will be against the basic concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be treated to be no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord? Yes, we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद यहाया साहब ने पूछ लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be elected. और यहाँ 63 पे लिखते हैं a person shall be disqualified. What is the difference between? इसको डील किया गया है, योर ऑनर. सब आर्टिकल 2 जो है ना 62 का, उसी में डील कर दिया गया मालूम पढ़ने जी. 62 का सब clause 2 है the disqualification specified in D and E. So that is not only the qualification but also the disqualification. मैं दोबारा पढ़ता हूँ. The disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is a non-Muslim, but such a person shall have good moral reputation. So मकसद दोनों का एक है. एक एंट्री के वक्त देखा जा सकता है
हाँ, एक बात जो खुरम साहब फरमा रहे थे कि इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता है, उसमें ये जरूर हो सकता है। बट आई टेंड टू एग्री विथ यू कि मकसद दोनों का एक मकसद है। क्योंकि देखें अब जैसे आप पहला वाला वो सिटीजनशिप वाली बात है ना, वो पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन, ठीक है। अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली। था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ जो कि, फिर वो उधर फंस जाएगा। तो मेरे ख्याल में इतना इस पे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। What I wanted to say earlier was, उसको आपने एड्रेस नहीं किया। देखें 62(1)(f) में declaration is coming from another source, from another court. Constitution is recognizing that there is a declaration coming from some court. Once that declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So Constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself, किसी केस को निकाल लें, नॉमिनेशन पेपर्स में होगी, वो किसी एक्ट के तहत है ना, उसकी मिस डिक्लेरेशन है वो भी किसी एक्ट के तहत है। सो दैट actual declaration is arising out of some violation of some law. Now that declaration is then borrowed by the Constitution, and the Constitution says then you stand disqualified. Samuel Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the parliament saying that declaration of law which is arising out of a violation of a law is being given a period. That's 5 years. So that also sort of comes into Article 62(1)(f) with the declaration that such a declaration which is given under the law, it's not under the Constitution, under the law will have a time frame. That's 5 years. So 5 years, so therefore one argument is that you don't require the amendment of the Constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the Constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration which is being borrowed by the Constitution in 62(1)(f). ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. अगर तो सिर्फ ये कहा गया हो ना कि इस शख्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए इस वजह से कि इसने अपनी डिग्री दी दूसरे, यही डिक्लेरेशन है। देखिए all over in all the declarations it says कि आपने मिस डिक्लेयर कर दिया है, आपने एसेट्स छुपा दिए है, they're actually identifying an event and then we are building on that event कि इसकी वजह से क्योंकि इसने रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की इसलिए ये अमीन नहीं है, ठीक। सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है कि आपकी नॉमिनेशन पेपर में ये चीज कम है, एफिडेविट में ये चीज कम है, आपकी एसेट्स में ये चीजें नहीं है, इट्स द इवेंट, द रेस्ट इज ऑल कंस्ट्रक्शन करके हम कह रहे हैं ना। सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है, और डिक्लेरेशन आप देखिए ना, वो कोई डिक्लेरेशन निकाल लें, वो डिक्लेरेशन किसी लॉ में है ना, वो कह रहे हैं कि जी आपका नॉमिनेशन पेपर इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट और द रोपा व्हाटएवर। तो डिक्लेरेशन जो कोर्ट दे रहा है वो लॉ में दे रहा है, तो फिर लॉ खुद कह रहा है कि ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन जो लॉ में होगी वो 5 साल की होगी, तो फिर वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? उसकी वजह ये है, कई जजमेंट ऐसी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि किसी शख्स को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया। पनामा केस की जजमेंट में वादे तौर पर 62(1)(f) मेंशन करके डिस्क्वालीफाई किया गया। सिर्फ ये नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो वाली डिबेट अलग है, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। हमारे पास जो इशू है, इज इट for duration of that parliament, is it a duration of 5 years, is it a lifetime? वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है। तो अब आप दूसरों का खत्म हो गए तो दूसरों काफी लोग हैं और 2 मिनट लूंगा। 63(1)(p) में वो कानून आ सकता है जो जनाब फरमा रहे हैं, 63(1)(p) में। लेकिन जहां तक 62(1)(f) का सवाल है, उसको बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 3(1)(p) में आएगी। तो क्वेश्चन इज कि जब आप कह रहे हैं दोनों को इंटरचेंजेबली आप पढ़ सकते हैं तो फिर तो आपका आर्गुमेंट अभी हमारे पास सिर्फ सवाल ये कि क्या लॉ में ये चीज आ सकती थी या आइन में अमेंडमेंट हो सकती थी। मैं तो ये समझता हूं आइन में अमेंडमेंट नहीं, तो वही देखना ना, अगर सपोज 25 साल जो आइन में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है अगर उससे रिलेटेड होता तो फिर तो आइन में अमेंडमेंट आती, या आइन खुद लॉ की डिक्लेरेशन पे रिलाई कर रहा है, तो वो लॉ कहता है मेरी डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन 5 साल की हुआ करेगी तो फिर क्यों? सिर्फ अगर तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली 62(1)(f) में किसी को डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है, फिर तो वो बात वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, अदरवाइज जनरली उसको ठीक समझ गए, चलिए समझ गए। आखिरी बात एक बात इससे पहले देखे, अगर ये तो सिचुएशन उस वक्त आती है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, सपोज रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि आपने फला चीज नहीं जमा की, क्या ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं है? और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है तो इलेक्शन लॉ तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट फाइल करेगा उस शख्स के अगेंस्ट, केस चलेगा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर्स नहीं है कि डिक्लेयर करे कि somebody is disqualified for such a period? This declaration ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन गया ना। बिल्कुल ठीक बात है। इस पे दो व्यूज हैं योर ऑनर इस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम। डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या? माय लॉर्ड वही मैं अर्ज करता हूं माय लॉर्ड, दो व्यूज हैं। नॉमिनेशन पेपर गलत फाइल किया, ठीक है, ही गेट्स ट्रैप्ड अंडर 62(1)(f). अब मुद्दत पार्लियामान की 3 साल भी हो सकती है, एक सेकंड है जी, बाई इलेक्शन हो सकता है, 3 साल भी हो सकती है, या कोई आदमी मर जाए, उसने कहा चलो मैं दोबारा इलेक्शन लड़ लेता हूँ, तो उसकी सीट पे आ गया 1 साल बाद, तो वो आपका कहना ये कि ये 5 साल भी ज्यादा है? बिल्कुल, एक इलेक्शन एक नॉमिनेशन पेपर, वो चाहे किसी और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होगा, किसी और सीट पे जाके नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दे, अगले दिन जमा करवा दे। अगर वो फिर किसी ने चैलेंज आप ना इस तरफ से चैलेंज हुआ है ना उस तरफ से भी चैलेंज हुआ है, वैसे पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये कि इस वजह से भी 332(2) जो है वो अल्ट्रा वायरस है। नहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि वो इट्स ओनली फॉर वन टाइम नॉमिनेशन पेपर, इसलिए 5 साल भी नहीं लगाया जा सकता उस पे कदम। आप कहते हैं 5 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर टू नॉमिनेशन पेपर की हद तक। और दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ये हुआ कि आप कहते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका इख्तियार सिर्फ पेपर रिजेक्शन की हद तक है, नथिंग एल्स। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड एंड नोवेल पॉइंट यू टेक। माय लॉर्ड, लास्ट माय सबमिशन माय लॉर्ड, चंद जजमेंट्स में अर्ज करूंगा जो कि समीउल्लाह बलोच के इफेक्ट को मजीद खत्म करती है माय लॉर्ड। पहली है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 137। पहले साइट तो नहीं हुआ है? नहीं माय लॉर्ड, आई डोंट थिंक सो माय लॉर्ड जी। 137 इसमें क्या हुआ? 137 व्हाट्स हैपेंड इन दिस? इसमें माय लॉर्ड ये कहा गया कि डिक्लेरेशन बाय कोर्ट होनी चाहिए, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट। ये तो अभी ये दीजिए, लेकिन ये साइट नहीं हुई जजमेंट। नहीं ये नहीं साइट हुई है। ये कितने मेंबर बेंच है? सेकंड माय लॉर्ड, ये 1 2 3 नहीं, इसमें भी उम्र सब 137 सरदार यार मोहम्मद रिंद जी माय लॉर्ड, ये तो इधर ही पड़ी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये माय लॉर्ड 3 मेंबर बेंच जजमेंट है, but the same learned जी author। माय लॉर्ड। देन माय लॉर्ड एक का फैसला आता है, लाइफ टाइम बैन है। जी ये है लाइफ टाइम, लेकिन इस बात पे कि डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट होनी चाहिए। अब अगली जजमेंट देखिएगा 2019। एक सेकंड। Disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution entails a lifetime bar eligibility as held by this court in Samiullah Baloch. ये तो इसको फॉलो कर पैरा 4 है माय लॉर्ड, पैरा 4 है
141 page पे my lord. हाँ वो पढ़ें फिर. The impugned judgment of the High Court have applied the bar of Article 62(1)(f) of the Constitution upon the petitioner without giving a finding that his declaration of Sanad al-Shahadatul Alamiya in his nomination paper filed in the year 2008 was a dishonest and deceitful action to meet the condition of graduate qualification in order to become eligible for contesting the general election. Apart from lacking such finding, the discussion in the impugned judgment is at best based upon a presumption and not on any finding or deduction made on the basis of any material qualifying as evidence. In the circumstances, the presumption drawn by the impugned judgment is conjunctural and cannot be made the ground for disqualifying the petitioner forever for contesting for holding an office in the constituent legislature of the country, my lord. Now, my lord, there is another judgment, 2019. 2019 SCMR 1939, my lord. Page 1939, my lord. 1943 and 1948 पे my lord इसका 1943 पे my lord relevant citation my lord 1939. नहीं relevant आप बता रहे थे. my lord एक 1943 पे मुलाजा फरमाइएगा पैरा नंबर 7 my lord. May I read my lord para 7? We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded. Para number 7 है my lord. 1943. Sorry my lord, ये भी उसी पॉइंट को है कि ये RO is not a court. RO is not a court. Para number 7 my lord. We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded in the said proceeding, nor does the order give any reason for disqualifying the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution. On the other hand, Learned Election Tribunal made a declaration against the respondent only under Article 63(1)(c) and none under Article 62 of the Constitution. In terms of the said law laid down by this court in judgment reported as so and so, the order dated 6/4/13 by the returning officer merged into the order of the Learned Election Tribunal dated 16/4/13. The disqualification imposed on the respondent by the returning officer under Article 62(1)(f) therefore did not survive. My lord, now the relevant इसमें एक minority view क्या था? Minority view भी बहुत relevant है, my lord. That is at page number 1945. ये paragraph 10 पढ़ लें. I think ये issue अब हमारे पास आ गए. एक copy रह गई मगर मेरे पास. ये पढ़ें. I am of the view that serious constitutional issues. I am of the view that serious constitutional issues require to be addressed inter alia, whether the disqualification of the private respondent under clause D and F of sub-article 1 of Article 62 of the Constitution was passed by the court of law or otherwise, whether the disqualification of the private respondent, if any, would be permanent or otherwise in terms of the test laid down in Samuel Bloch case, whether the lack of bona fide on part of his petitioner in invoking the constitutional jurisdiction of High Court under Article 199 of the Constitution and having an alternate remedy under the election laws rendered the petition maintainable or otherwise, whether the disqualification of private respondent could be ignored by this court, keeping in view the law, dicta laid down in Sher Alam Khan and Raja Shaukat Aziz Bhatti case. Accordingly, for the reasons stated herein above, leave of this court be granted to consider and read the issue stated above. So we are lucky to have this. It wasn't a dissent. It was these questions. The learned single judge. The three-member bench said require consideration. जी मालूम, ये बिल्कुल ठीक बात. तो ये तो बात कब से चल रही है कि ये इशू आप फैसला कर लें. ये अब कब की बात है? 2019 की बात. 2019 की बात है. अगर 2019 अब हम 24 में आ गए 5 साल. ये अगर आप एक पैराग्राफ और पढ़ लें, ये 2019 SCMR पेज 1943 पैराग्राफ 9. पैराग्राफ 9 में समी लॉ को फिर डिस्कस किया. जी मालूम. Be that as it may, in Samuel Bloch, we have held
that disqualification of election candidate or a holder of elected office under 62(1)(f) of the Constitution comes into existence when he is declared by court of law to lack any of the qualities mentioned in clause F of Article 62(1)(f) of the Constitution. In the present case, the only declaration against the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution was given in summary proceeding by the returning officer on 6/4/2013. As already noted above, no evidence was recorded by the returning officer to sustain his finding, nor he recorded reason for invoking disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution. He is not a court of law but a statutory forum of limited jurisdiction. Therefore, the condition that only a court of law can issue a declaration of disqualification under Article 62(1) of the Constitution. What I think the point that can be made is that this question that was raised by a bench has been agitating this court for a considerable period of time. Different voices, different judges are saying, like in this judgment also, let's resolve this once and for all. And so it's good that we are resolving it once and for all. मतलब मैं चंद जजमेंट में लिखवा देता हूँ, पर साइज भी बता देता हूँ, बट टाइम क्योंकि बहुत हो गया। बता दें। मालूम एक है मालूम 2019 SCMR 1684 जी, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया है कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद डिक्लेयर कर सकती है किसी को भी that he is not a sagacious, he is not a mean. नेम क्या है ऑफ योर पार्टीज? मैंने ये है निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान. निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान. Even without recording evidence. जी 1695 है मालूम इसका रेलेवेंट पेज. 1695 पैरा नंबर 7 मालूम. ठीक है, नेक्स्ट बताइए. मालूम इसके बाद है मालूम 2019 SCMR 137 मालूम. सारे मामला 2019 में हुए. 2019 SCMR पेज है मालूम 137. इसका जो रेलेवेंट पेज है 141 है मालूम. पेज 141 नहीं, साइटेशन का 137 है मालूम. 137 रेलेवेंट है पेज 139 पेज 141 मालूम जी. इसमें को वारंटो इशू हुई थी और वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है मालूम. इसके बाद है मालूम इसमें क्या हुआ था? वारंटो हाई कोर्ट से इशू हुई थी अगेंस्ट ए पर्सन हु वाज अ रिटर्न कैंडिडेट. उसके खिलाफ ये अपील जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास इनको वारंटो वाज अपहेल्ड मालूम. नाउ मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732, दैट इज फेमस हबीब अकरम केस मालूम. पेज 732. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर बेंच ने ये फरमाया, ये लार्जर बेंच जजमेंट है मालूम. कितने जजेस? 732. सॉरी मालूम. नो मालूम ये नहीं, वो है मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732. ये वो नहीं, सॉरी मैं इसको मैं बताता हूँ. ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन के ऑर्डर पर डिस्क्वालीफाई किया है. फिर अपनी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर ये पेज ना 732 का जो रेलेवेंट पैरा है मालूम, वो मैं अर्ज कर देता हूँ. ये 736 एंड 737 पेज पे मालूम. नहीं, ये हबीब अकरम नहीं है मालूम. ये हबीब अकरम नहीं, बीबी यास्मीन शाह जी. सॉरी, ये हबीब अकरम नहीं, वो हबीब. और ये 3 मेंबर बेंच है जी मालूम. वो जो हबीब अकरम केस है मालूम, दैट नहीं, ये एक सेकंड, बीबी यास्मीन शाह का केस है. और इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? 337 एंड 336 एंड 337 मालूम. 732 पे थे आप. सॉरी 737 36 एंड 37. ये पैरा नंबर 14 है मालूम. इसमें क्या होल्ड हुआ है? From perusal of original record, it is clear that and obvious to us that respondent number 1, whose name is BB Yasmin Shah and whose father name is Nadra, database is Ali Hussain Jamali, and whose date of birth according to her NIC and Nadra record. ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन का था? ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है मालूम. इसको ये जो ऑर्डर था नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन अथॉरिटी का, उसको अपहोल्ड किया गया मालूम. नहीं, डिस्क्वालिफाइड पीरियड तो नहीं लिखा है. ये लिखा है 62(1)(f) में ही किया है इसको. बट पीरियड नहीं लिखा है. पीरियड नहीं लिखा, लेकिन 62(1)(f) तो ये लाइफ टाइम नहीं है.
अब उस वक्त तो लाइफ टाइम था मालूम जिस जो जजमेंट आई उस वक्त नहीं, इस जजमेंट में लाइफ टाइम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल, इसमें सिर्फ 62(1)(f लिखा, इसमें लिखा है डिस्क्वालीफाइड। जी मालूम। सो द इम्प्लीकेशन विल बी इट वाज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट नॉमिनेशन पेपर। मतलब इसमें क्योंकि 62(1)(f पे रिलाई किया गया, इस उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया और उस वक्त के लॉ के मुताबिक पीरियड नहीं बताया, अलग पीरियड नहीं बताया। ठीक, आगे है जो पीरियड नॉट मेंशन। ठीक, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 माय लॉर्ड, 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 578 माय लॉर्ड। इसमें माय लॉर्ड ECB का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर समरी प्रोसीडिंग में था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अप होल्ड हुआ। इसका 589 पेज माय लॉर्ड रेलिवेंट है। शौकत अजीज भट्टी जी माय लॉर्ड। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा जरताज गुल की हिफाजत जी, इसमें क्या हुआ था माय लॉर्ड? इसमें ECP ने एक आदमी को डिस्क्वालीफाई किया, वो रिट में गया, रिट जो है वो रिमांड हो गई कि आप दोबारा डिसाइड करें। उस रिमांड ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECP आया और ECP की ये अपील, वो ऑर्डर अपील मंजूर होकर उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया गया। परमानेंटली? जी माय लॉर्ड। इन व्यू ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टेंसेस पेज 589 माय लॉर्ड, पैरा नंबर 19। Here the matter was converted into suo motu proceedings under Article 184. ठीक मालूट, ये मैंने एक पेपर बुक तैयार की है मालूट। आखिरी मेरी सबमिशन सिर्फ ये होगी कि क्योंकि पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट है उसके बारे में कि कौन सा जजमेंट किन हालात में रिविजिट हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, उस पे मैंने एक एक पेपर बुक तैयार की है जो बेसिकली मैं पढ़ूंगा नहीं मालूम, देख लीजिएगा। वैसे अगर कहें तो मैं प्रिसाइजली अर्ज कर देता हूँ वो ग्राउंड्स क्या हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रेसिडेंट को रिविजिट किया जा सकता है। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट मालूम। ये जो आपने केस साइट की पिछले ये 2018 सुप्रीम कोर्ट 578, इसमें ट्राइब्यूनल में नहीं गए थे बल्कि इलेक्शन कमीशन में गए थे। इलेक्शन कमीशन में गए थे, इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया। न ट्राइब्यूनल या RO नहीं था मालूम। रिलेवेंट पोर्शन बता दें, इसमें कोई खास पेजेस हैं जो हम पढ़ें या सारा आप पढ़वाओगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक करके बता देता हूँ। इसमें पेजेस सिर्फ बता दें, मैं पेजेस बता देता हूँ मालूम, मैंने ये नोट किए हैं अपने पास। लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एक किताब है गार्नर की, लेकिन इसमें बस पेज बता दें। मैं इसके जनाब पहला पेज है मालूम, पेज 3 मालूम देख लीजिएगा, नोट फॉर माले, बाकी बाद में पेज 3 बता। ये है अप्रूवल एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन ऑफ ए जजमेंट। ये मैंने अर्ज किया कि कितनी अप्रूवल, पेजेस बता दें। पेज नंबर 3 मालूम इस पेपर बुक। पेज नंबर 9 है मालूम, आउट क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल। ठीक है। पेज नंबर 40 है मालूम, 40 पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन। ये पढ़िए नहीं, बस ठीक बता दें, हम खुद पढ़ लेंगे। 9 48 मालूम, 48 then 56 माय लॉर्ड। आप वो सारे चैप्टर्स ही बता रहे हैं ना? जी, बेसिकली वो रेलेवेंट चैप्टर जो हैं वो मैंने 56 एंड देन पेज नंबर 13 पे भी माय लॉर्ड ये इसका वो क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट है, पेज 13 भी रेलेवेंट है इसका। देन 18। So these are all the grounds to revisit and overrule it. जी, मेरी हम सबमिशन ये है कि सिर्फ ये है कि ये इम्प्रेशन जाता है और मीडिया पे इस पर रोज बात होती है कि जजेस की कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद फैसले तेज होते हैं। ये जजमेंट ऐसी है समीउल्लाह बलोच की जिसको रिविजिट होना चाहिए और इसके लिए जस्टिफाइबल ग्राउंड्स मौजूद हैं। और ये अगर ये लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इस तरह डिक्लेयर किया जाए तो फिर ये मामला आइंदा के लिए खत्म हो सकते हैं। जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है उसको गाइडलाइन दी जा सकती है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने जुडिशियल प्रेसिडेंट को चाहे कितने मेंबर जजमेंट हो उसको रिविजिट करना है और किन चीजों को आपने कंसीडर करना है। आपका कहना है कि वो जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं है।
मेरा कहना यह है कि वो प्रॉपर नहीं हुई और उसको रिविजिट करने के लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड हैं जिनको रिविजिट किया जा सकता है। प्रॉपर अगर अटेंड नहीं किया तो क्या वो जजमेंट पर इंक्योरी है? सिर्फ प्रॉपर अटेंड ना करना काफी नहीं है, उसके साथ पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन होना, अप्रूवल ना होना उसी जजमेंट का सेम कोर्ट से, क्रिटिसिज्म आना फ्रॉम द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, लीगल स्कॉलर्स का, पार्लियामेंट की तरफ से डिसअप्रूवल आना, ये सारी चीजें कंसीडर होके और फिर स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल कहाँ उसकी वैल्यू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस जो है वो इतना फोर्स नहीं रखता। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस बहुत फोर्स रखता है, लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन होगी वहाँ उसका स्टेट डिसाइसिस की इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मुश्किल काम है और सुप्रीम कोर्ट अपना अगर समझे कि हमसे रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट कर सकती है। स्टारी डिसाइसिस का प्रिंसिपल शायद हमने अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिक्र किया है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैंने 3 जजमेंट्स पढ़ी हैं, जो ऑनर की पढ़ी है, जज साहब की पढ़ी है एंड जस्टिस अभी नहीं आई, अभी जनाब की आपने पहली पढ़ी नहीं जनाब की वाही नहीं, वैसे माशाल्लाह यू आर्ग्यूड वेरी वेल, आई एम ग्रेटफुल। You argued before a larger bench before of this strength or no? Or this is your first experience? 5-member bench के सामने argue किया। चले, okay, but we appreciate your very precise, and I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your. We will take a short break, and so Aji Bhandari sir, we will come back. My lord, if I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. We'll hear you. My lord, because I have to, for personal and professional reasons, I have to be back in Lahore, and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can... If you've heard all this, probably they have reduced your, Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone. Just representing myself. So and you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Sure. Grateful. So we will return after a while. Hello. ठीक है। अब ये सब भी मौजूद है जी। So आगे तो ऐसा करते हैं, we will hear you last. जी मैं आखिर में आऊँगा, but we resume at 2 or 2:15. नहीं, at least 2:15. It may be even longer. Mikey can be heard first. जी, we hear Mr. Bhandari, then we'll hear Mr. Faisal Siddiqui, and then we'll hear you. And in the meantime, ये दे दीजिए इनको, पता नहीं इन्होंने देखा है. Another amicus has submitted a note. तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ लें. Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूँ. There is another serious question of law in this case, and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h). मेरी अपील्स में जो 63H के जी कन्विक्शन अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो 5 साल का टाइम लैप्स नहीं होता। तो जो इम्प्यून जजमेंट है मेरी अपील्स में उन्होंने उसको रिडंडेंट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इवन इफ व्हाट डू यू वांट, आई एम सेइंग कि वो जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए। आप बेशक फैक्ट्स पे आई नो यू 63(1)(h) में आप चाहते क्या है कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन हो, क्या हो? लॉर्ड वो तो लिखा हुआ है, उसमें मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को फॉलो किया जाए, उस प्रोविजन को, क्योंकि जो लाइफ हुई है, बट विल हियर यू, आपकी लाइफ हुई है सर? लाइफ नहीं हुई। No, but Sath will hear you. I mean, the batting order we've just explained. Batting order. Thank you. The courts, Supreme Court and the High Courts have other powers as well. Please read. My lord, there shall be a Supreme. The courts, Supreme Court and the High Courts have other powers as well. Please read. My lord,